जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञानपीठ। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा कंप्यूटर रो मॉक टेस्ट 2 जहा कि आपण मानकु हेल्प करिवो अपकमिंग OSSC CGL OSSSC RI ARI AMIN ICDS SSB रो जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क एग्जाम पाई। ठीक अछि, चलंतु स्टार्ट करिबा आज क्लास। आज क्लास रे टॉप 20 क्वेश्चन अछि जहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कराई कि बना जाइछि। तो आपण माने आउट ऑफ 20 रु केतोटी क्वेश्चन लो राइट आंसर दउचंती निश्चित जणाई। ठीक अछि, चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि इन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन रिसेंट वर्जन दैट इज 2016 फॉन्ट। तो एमएस वर्ड वी नो आमे कोंती एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोली वर्ड प्रोसेसिंग एप्लिकेशन जो तार हमें डॉक्यूमेंट तैयारी करथांती, राइट। तो ए एमएस वर्ड रो वर्जन 2016 प्लस रो डिफॉल्ट फॉन्ट कोन रही एरियल टाइम्स न्यू रोमन कैलिब्री भटेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैलिब्री। कैलिब्री रहइबो डिफॉल्ट फॉन्ट कहारो एमएस वर्ड एप्लिकेशन। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एक्सेल फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ ए लुकअप वैल्यू इन ए रो और कॉलम। एमानक मध्यरु को फंक्शन ता यूज होई थाए रिटर्न करिवो जहा कि द पोजीशन ऑफ ए लुकअप वैल्यू इन ए रो और कॉलम मैच इंडेक्स फाइंड वी लुकअप। द राइट आंसर इज मैच फंक्शन। क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट को हमें को एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन टूल। दिस इज एन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन और वी कैन से प्रेजेंटेशन टूल। प्रेजेंटेशन टूल पई हमें ए एप्लीकेशन को यूज कर। तो ए एप्लीकेशन लो फाइल एक्सटेंशन कोन रे .pptx पचाची कोटा वैलिड नुए .pptx .ppsx .potx .docx। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी docx टा हमरो वर्ड फाइल का पई वर्ड फाइल रो एक्सटेंशन एमाने होचंती पावर पॉइंट रो एक्सटेंशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इन एक्सेल व्हिच कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। हमें जानिचंती रेफरेंसिंग तीन टाइप रो गोटे होची एब्सोल्यूट गोटे होची रिलेटिव another one is mixed रेफरेंस। तो से कोई को कैरेक्टर टा यूज होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पाई स्टार एंड डॉलर एट द रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहिछि द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड व्हाट। सेल टेबल बॉक्स इज क्वेश्चन अछि आमे रो और कॉलम रो कॉम्बिनेशन को कौन कहती। फॉर एग्जांपल एटा हमर एक्सेल शीट जोटा हॉरिजॉन्टल थिबो ताको हमें रो कहती, जोटा वर्टिकली थिबो ताको हमें कॉलम कहती, राइट। तो कॉलम और रो रो कॉम्बिनेशन ले जोटा थाए हमें ताको कौन कहती सेल बोली कहती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक अछि, ए सेल रे हम डाटा को इनपुट कर बा एंट्री करि थान। ठीक अछि, सेल रो ना हमें केमिति जानिबा always column name starts from A, B, C, so and row number start with 1, 2, 3, so and on. So A cell ro na ta kemiti janiba na column name A then cell number A1. Similarly A cell ro name ta kemiti janiba B2. Clear। column name and row number। जदि आपण माने एक्सेल सिखिबा को चाहउछथि मु ऑलरेडी एक्सेल रो मास्टर क्लास स्टार्ट करि सारछि, प्लेलिस्ट को जाई कि आपण माने चेक करि पारिबे। ठीक अछि। Next question of question number 6 which component of the computer performs logical decision। CU RAM ALU HDD। देखो हम एठी एलिमिनेट करबा HDD कोन हार्ड डिस्क ड्राइव जोटा कि गोटे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हमें कोइ पारे कोन स्टोरेज डिवाइस यार फुल फॉर्म भी मन रखिबे HDD रो कोन हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक अछि, ये ताले हबो नाही से कोइछि कोडा लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करे। ALU स्टैंड्स फॉर
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके. RAM stands for random access memory. C stands for control unit. ओके. RAM टा भी गोटे हमर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हम कहि परिया. बट एठी से पचारची को कंपोनेंट लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करे. लॉजिकल पई हमें कोन कहि पारे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन वोटिंग प्रोसेस? वोटिंग प्रोसेस रे पोस्ट रो फुल फॉर्म टा कोन? प्राइमरी आउटपुट स्टोरेज टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ओवर स्टार्ट टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. This is an important question for upcoming CGL exam. Okay. जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके तैयारी करछि. तो निहाती एई जति कि टॉप 20 क्वेश्चन अछि ता मध्यरो 2 रु 3 टी क्वेश्चन निश्चित रूपे आसीबो एग्जाम. ठीक अछि. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड और पावरपॉइंट? पावरपॉइंट रो हाइपरलिंक इंसर्ट करिया पई शॉर्टकट की कोन? प्रथम बुझिबा हाइपरलिंक कोन. हाइपरलिंक कोन? जोटा को हमको गोटे पेज रो आउटे पेज को नै जाइता, फ्रॉम वन पेज टू another पेज हमको कैरी करथा है. मींस हमें जदि क्लिक करिबा गोटे पेज रो हमें आ गोटे पेज को जाई परिबा. ठीक अछि. तो ताको हमें कोन कहबा? हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक क्रिएट करिया पई कोन शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी प्लस के. देखंतु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस के. हमें हाइपरलिंक को क्रिएट करिया पई यूज करबा शॉर्टकट. एच टा हमें जानचंदी कोन? फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड एंड रिप्लेस. सिमिलरली एल टा होची हमर लेफ्ट अलाइनमेंट पई. हमें वर्ड रे यूज करबा लेफ्ट अलाइनमेंट पई. ठीक अछि. तो सिमिलरली राइट अलाइनमेंट पई कोन? CTRL. एटा आपण मते ए क्वेश्चन आंसर टा राइट अलाइनमेंट पई, वर्ड रो राइट अलाइनमेंट पई शॉर्टकट की कोन? कमेंट सेक्शन लो जणा. राइट अलाइनमेंट आ होची जस्टिफाई. ठीक अछि. कमेंट सेक्शन लो जणा. लेफ्ट टा होची CTRL प्लस ए. ओके. तो राइट आंसर कोन? हाइपरलिंक पई कंट्रोल प्लस के. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. 9 नंबर क्वेश्चन कहला इन MS access which object is used to retrieve specific data by criteria? प्रथम बुझिया MS access टा को टाइप रो एप्लीकेशन. MS access होची गोटे डाटाबेस सॉफ्टवेयर. डाटाबेस सॉफ्टवेयर. डाटाबेस कोन पई यूज हुए? डाटाबेस हमें यूज करिबा टू स्टोर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ऑर्गेनाइज्ड मैनर. डाटा टा को हमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे स्टोर करिया पई हमें डाटाबेस को यूज करबा. क्लियर? तो MS access होची गोटे डाटाबेस सॉफ्टवेयर. तो से कहला व्हिच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा बाय क्राइटेरिया. किछि गोटे क्राइटेरिया थिबो, से क्राइटेरिया और वी कैन से कंडीशन. ओके. कंडीशन को अप्लाई करिकि हमें डाटा को रिट्राइव करिवा फ्रॉम डाटाबेस, फ्रॉम MS access. टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी. क्वेरी को यूज करिकि हमें डाटा को रिट्राइव करिवा. क्लियर? नाउ 10 नंबर क्वेश्चन. Which layer of the OSI model is responsible for encryption and decryption? फर्स्ट हमें देखिबा OSI रो कोन OSI जो रहिला तार कोन लेयर रहउछ. OSI रे 7 लेयर. OSI रो केतटी लेयर रहबो? क्वेश्चन आसे हाउ मेनी लेयर्स इन OSI? एंड OSI रो फुल फॉर्म कोन? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. एको मध्ये मन रखिबे यार फुल फॉर्म टा OSI मॉडल लो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. कोन लेयर रोची देखंतु. फर्स्ट रहइबो फिजिकल लेयर. फिजिकल परे रहइबो सेकंड रे डाटा लिंक को लेयर रहइबो, डाटा लिंक लेयर. थर्ड रे रहइबो नेटवर्क लेयर. फोर्थ रे ट्रांसपोर्ट को लेयर रहइबो, ट्रांसपोर्ट.
फिफ्थ रे रहिबो सेशन, सिक्स्थ रे प्रेजेंटेशन, ओके, सेवेंथ रे रहिबो एप्लीकेशन। तो आमे जदि देखिबा ओएसआई मॉडल जो रहउची कौन कौन लेयर रहिला तार, फर्स्ट रहिला फिजिकल लेयर वन रे, देन डाटा लिंक सेकंड, थर्ड रे नेटवर्क, फोर्थ रे ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ रे सेशन, सिक्स्थ रे प्रेजेंटेशन, सेवेंथ रे एप्लीकेशन। ओएसआई फुल फ्रॉम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक अछि। तो सी कहला ओएसआई मॉडल इज रेस्पोंसिबल फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। को लेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पई रेस्पोंसिबल, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन, सेशन, एप्लीकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is presentation layer. Presentation layer responsible for encryption and decryption. ठीक अछि। 11 number, which key is used to refresh a web page or window in Windows operating system? को शॉर्टकट की बा को फंक्शन की टाको हमें यूज करिबा रिफ्रेश करिया पई वेब पेज को आउ विंडो। F4, F3, F5, F8। राइट आंसर इज F5 फंक्शन। हमें जानछन फंक्शन की F1 रु F12 पर्यंत अछि 12 टी, राइट। F1 फंक्शन की कोन पई यूज हुए, हेल्प विंडो को ओपन करिया पई, मन रखिबे एटा भी इंपोर्टेंट अछि। अब हमर F5 रहिला रिफ्रेश पई वेब पेज आउ विंडो। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी? रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम। हमें जानछन रोम होची रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी एमान सब कोन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। को मेमोरी नॉन वोलेटाइल, परमानेंट स्टोर हेके रही और परमानेंट स्टोर हेके रहइबो, एथरे डाटा हमर परमानेंट स्टोर हेके रहइबो। बट रैम होची हमर रीड ओनली मेमोरी सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होची हमर कोन रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा वोलेटाइल इन नेचर, कोन वोलेटाइल। तो राइट आंसर हे गला ऑप्शन नंबर डी, RAM इज ए वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट 13 नंबर कोन कहला, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड टुगेदर इज कॉल्ड ए record, file, database, file। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड टुगेदर हमें ताको कोन कहबा डाटाबेस बोली कहबा। कोन कहबा डाटाबेस। डाटाबेस रे नंबर ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड टुगेदर। क्लियर। कौन कौन डाटाबेस एप्लीकेशन अछि वंस मन रखि दियंतु। सॉफ्टवेयर जोटा रहिछि MySQL अछि, MS Access, ओके एग्जांपल आसे, देन हमर रहइबो MongoDB भी अछि गोटे, ओके इमान सब कोन डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज फिशिंग रेफर टू? फिशिंग कहले हमें कोन बुझिया, इंटरनेट स्पीड, illegal file sharing, fraudulent email tricks, CPU performance। the right answer is option number C, fraudulent email tricks। ईमेल द्वारा हमें जदि काहा को जदि कोनोसी लोक ईमेल यूज करिकि आपन को फ्रॉड करिबा को चाहू थाए सेही पड़ी टेक्निक को हमें कोन करिबा फिशिंग बोली कहबा। कोन कहबा फिशिंग बा अनवांटेड ईमेल जदि आपन मानन को आसुची, आपन जदि वंस क्लिक करि दबुचंती, आपण मानकर जहाँ भी वाइटल इनफॉरमेशन अच्छी लाइक आपनकर बैंक डिटेल्स है, आपनकर पान कार्ड डिटेल्स है गला, जहाँ भी वाइटल इनफॉरमेशन आपनकर से ताको चोरी करी नबो के जे कि ए फिशिंग टेक्नोलॉजी की यूज करूथो। ओके फिशिंग टेक्नोलॉजी के को मीडियम रे यूज करा जाए ना ईमेल माध्यम रे यूज करा। क्लियर। नेक्स्ट ओके स्मिशिंग गोटे अछि स्मिशिंग। स्मिशिंग कोन जो फ्रॉडुलेंट ट्रिक टाको हमें कोन करबा को मीडियम रे यूज करा जाए ना मैसेज थ्रो मैसेज। ओके स्मिशिंग। क्लियर मन रखियो। नेक्स्ट होची 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए मैक्रो इन एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर? मैक्रो काहू कहआ जाए, फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, ऑटोमेटिंग टैक्स, जूम। मैक्रो हमें का कहया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑटोमेटिंग टैक्स। मींस हमें रिकॉर्ड करि दो, हमें जहां भी काम करूचंती एक्सेल ले हमें ताको मैक्रो यूज करके रिकॉर्ड करदवा।
दैट मीन्स परवर्ती समय रे आमे जदी पुणी सेही काम करूचंती सेही रिलेटेड वर्क करूचंती हमको आ बारंबार निजे करबा को पड़िबो नै आमे जस्ट क्लिक करबा से ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हेके चलिबो ठीक अछि ताको आमे कोन करबा मैक्रो बोली कहबा ऑटोमेटिक टास्क बोली कहबा ठीक अछि नेक्स्ट 16 number question which protocol is used to transfer file over the internet आमे फाइल ट्रांसफर करिबा थ्रू इंटरनेट ओवर द इंटरनेट SMTP FTP POP3 HTTPS the right answer is option number B that is फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल यूज हुए FTP तार फुल फॉर्म होची फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके नेक्स्ट होची SMTP तार फुल फॉर्म होची सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एको मध्ये मन रखिबे POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल version 3 then HTTPS hyper text transfer protocol then secure clear next 17 number ChatGPT is an example of what compiler traditional AI generative AI operating system माने वर्तमान कोन नाउ डेज आमे सुनुचंती एवरीडे लाइफ रे आमे सुनुचंती कोन चैट जीपीटी गोटे एआई टूल तो ये हमको बहुत काम रे हेल्प करूची आमे ईमेल राइटिंग करबा एसे राइटिंग करबा जहां भी डाउट होची आमे चैट जीपीटी को पचाले हमको आंसर गोटे मिनिट भी लागुनी हमको आंसर दे दोची राइट तो चैट जीपीटी इज ए एआई टूल बट व्हिच टाइप ऑफ एआई टूल ए तो कंपाइलर हबो नै तो ट्रेडिशनल एआई जनरेटिव एआई ऑपरेटिंग सिस्टम हबो नै या मिदर कोटा ना जनरेटिव एआई चैट जीपीटी को कंपनी तयारी करिछि ना माइक्रोसॉफ्ट रो ओपन एआई कोन कहया ओपन एआई एंड जे तयारी करिथिले ताको ना कोन मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे ठीक अछि चैट जीपीटी को जो जे तयारी करछन जो साइंटिस्ट ओके जो डेवलपर साइंटिस्ट तयारी करछन्ती आंसर मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे नाउ व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर बायोस रो फुल फॉर्म कोन एटा बारंबार एग्जाम रे आछी बारंबार ए क्वेश्चन टा आपण माने निश्चित देखुथिबे बारंबार ए क्वेश्चन टा बायोस रो फुल फॉर्म एग्जाम रे आछी तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाउ 19 which social media platform is known for short video content ट्विटर टिकटॉक फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर तो नुहे एटा शॉर्ट वीडियो कंटेंट तयारी हमें करंती नै टिकटॉक कोन टिकटॉक मझिरे बैन हो जाइतला न कि नै बैन हो जाइतला ए गुडे चीन देशर एप्लीकेशन टा तो वर्तमान बदे बैन हटि जाइछि टिकटॉक रु जो माने यूज करूथिबे से माने निश्चित भाव जानिथिबे टिकटॉक एप्लीकेशन विषय रे तो टिकटॉक एप्लीकेशन हमें यूज करंती कोन पई शॉर्ट वीडियो कंटेंट माने जोडा हमें रील्स कहउछ कोडा इंस्टाग्राम रे जेमिति रील्स ओके सिमिलरली टिकटॉक एप्लीकेशन यूज होता है शॉर्ट वीडियो कंटेंट तयारी करिया फेसबुक नुहे टेलीग्राम भी ना लास्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट्स सीपीयू टू रैम एंड डिवाइस को पार्ट कंप्यूटर रो कनेक्ट करिथाय सीपीयू को रैम सहित एंड डिवाइस सहित जीपीयू यूएसबी बस रोम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बस कोन बस जीपीयू रो फुल फॉर्म ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट मन रखिबे यार फुल फॉर्म का सिमिलरली रोम रो तो आपण मन जानचंती कोन रीड ओनली मेमोरी कोन रीड ओनली मेमोरी ओके नेक्स्ट होची बस रो फुल फॉर्म कोन बस रो फुल फॉर्म होची बाइनरी यूनिट सिस्टम यूएसबी रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सल
serial bus. Okay. So which part of a computer connects CPU to RAM and device? That is option number C, bus. Clear? तो यह थिला मोस्ट इंपोर्टेंट 20 MCQ ऑन कंप्यूटर जहाँकि आपण मानक अपकमिंग एग्जाम रे हेल्प करिवो प्रैक्टिस करंतु आ आपण माने केतोटी क्वेश्चन लो राइट आंसर देले कमेंट सेक्शन में जणा ठीक अछि तो लाइक करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर मध्य करंतु आपण मानक फ्रेंड्स सहित समान भी जानिबा दरकार ओके सो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो